हाय स्टूडेंट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज़ यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आइल्स की आपको प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं 24 अप्रैल 2021 को आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। गुजरात की कुछ सिटीज़ में कंडक्ट हुआ है, हरियाणा की कुछ सिटीज़ में कंडक्ट हुआ है, ऑल ओवर पंजाब और चंडीगढ़ में कम्प्लीटली कैंसिल था। होपफुली पंजाब और चंडीगढ़ और बाकी सिटीज़ में भी ये जल्दी ही रिज्यूम होगा। बात करते हैं आज के एग्ज़ाम की। तो टास्क 1 में बार ग्राफ आया था, बहुत इजी था। बार ग्राफ लिसनिंग और रीडिंग का लेवल भी बहुत इजी था। टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 में जो टॉपिक था वो कुछ इस तरह से था। An increase in the production of consumer goods result in the damage of our natural environment. What are the causes and solution? थोड़ा सा टिपिकल लगा था ये स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं इसका सैंपल आंसर मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ। नेचर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, also to life in general. Nature is a blessing that God bestowed on us. Natural environment provide us with many valuable things, but nowadays with the increase in the production of consumer goods, the natural environment is deteriorating at very fast rate. I would like to discuss some major causes and solution of this problem. To begin with the causes, the first point which strike my mind is that world's population is increasing day by day, which is one of the main reason of nature degradation. As the population incline, the demand for consumer goods also rise high. Moreover, we are not using natural resources judiciously. सही तरीके से मतलब it is rightly said that nothing can be said when a man's need turn into greed. The water is ruining, forests are depleting, quality of soil is deteriorating, and so on. We are plundering the nature's beauty from the future generation. The landfill sites are filling with non biodegradable waste. Destroying the used plastic is becoming the major problem. The solution are not easy. Steps have to be taken on war footing. However, there is a popular saying, nothing is impossible. Likewise, this problem also has few possible solutions. First of all, we should use the natural resources wisely. We should buy and use the consumer goods in a limit, as it is rightly said that excess of everything is bad. Further, controlling the world population growth will act as panacea to this problem. Moreover, some alternative measures should be used by the industries to manufacture consumer products. Moving further, we should plant more and more trees to save our natural environment. We should adopt 3R policies, that is, reduce, reuse, and recycle. We should avoid the use of plastic and polybags as these are the major threat to the environment. Government should make strict laws to prevent the misuse and pollution of natural environment, and any person who breaks the law should be brought to the book. In conclusion, it can be said that various causes have given the rise to the issue of nature degradation. However, if we work on the solution with full dignity, then it will surely act as panacea to this menace. Otherwise, the day is not too far when we will not able to enjoy nature's myriad feast. सो दिस वॉज द सैम्पल आंसर। आप बहुत सारे और भी रीज़न मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रिपेयर रहिए, कभी भी आइल्स टेस्ट रिकंडक्ट हो सकते हैं इन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।